Hello student, how are you? In yesterday lecture, we have discussed about male reproductive system, where we have read primary sex organs testes, then secondary or accessories sex organs, in which you have read accessories duct and accessories gland. After that, you have read complete descriptions of testes, their locations, number of testes, and its parts, and accessories duct system where and accessories glands, where you have read prostate gland, seminal vesicle, and bulbourethral glands. After that, you have read external genitalia. Then the same structure or same wording present in female reproductive system. So accessories duct, what is in male reproductive system? Accessories duct, the male sex accessories duct include retitestes, vasa efferentia, epididymis, and vasa deferens. There are four accessories duct. Which one? Retitestes, vasa efferentia, epididymis, and vasa deferens. The seminiferous tubules of the testes open into vasa efferentia. Seminiferous tubules कहाँ पर open हो रहे हैं? Vasa efferentia through retitestes. The vasa efferentia leave the testes and open into epididymis located along with posterior surface of each testis. The epididymis leads to vasa deferens that ascends to the abdominal and loops over the urinary bladder. जो एपिडिडाइमस है ये क्या कर रहा है? ये ऊपर एक लूप के फॉर्म पर जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंसिया. Clear? Vasa differentia that ascends to the abdominal and loop over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicles and open into the urethra as a ejacticular duct. So these are the accessories duct of male reproductive system. Now after that we will reach female reproductive system, and today's topic is female reproductive system and conclusions point. So we will start female reproductive system. Now female reproductive system consists of pair of ovary. You just underline, you just remind this term many times. Pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, and vagina, and the external genitalia. The external genitalia is a parts of female reproductive system. It is located in pelvis region. Yes, your body cavity basically divided in three parts: thoracic region, abdominal region, and pelvic region. So external genital organs located in a pelvic region. These part of the system along with a pair of mammillary glands. इसके साथ mammillary glands भी include है, because we have already discussed in male female reproductive system there are primary sex organ, secondary sex organ, where you have read as accessories duct and accessories gland. The mammillary glands is come under the accessories glands. Mammillary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and child care. Clear, student? Mammillary glands maintain or manage an important role during the process of pregnancy, birth, and child care. Are you clear? Ovaries are the mammillary female sex organ, primary female sex organ that produce the female gametes. Ovary क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. क्या प्रोड्यूस कर रही है? गैमेट्स और ओवम. तो क्या है? ओवम इज अ फीमेल गैमेट. And several steroid hormones, ovarian hormones, क्या कर रहे हैं? ओवरीज बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है. द ओवरीज आर लोकेटेड वन और ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल.
कहाँ है? दो से there are two ovaries. Ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and it is concerned to the pelvic wall and uterus by the ligaments. Now see this figure. Each ovary is covered by a thin epithelium which enclosed a ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. Now this is the sectional views of male pelvis showing reproductive system. इसका कौन सा है? डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यूज. ठीक है, कौन कौन से पार्ट है? दिस वन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस वन इज यूट्रस, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज pelvis symphysis, this one urethra, clitoris, labium minora, labium majora. ये दो, labium minora, labium majora, we will discuss later. Vaginal orifices, anus, vagina, rectum and cervix. Lateral views है ये. किस तरीके से? Sectional view. तो it is some organs will be behind in sectional view, some organs will be clearly you will see in concept views, female reproductive system, lateral views, front views. Okay student, तो ये side views है and some organs you will see in lateral front views. The oviduct of fallopian tube, uterus and vagina constitute a female accessories duct. फीमेल एसेसरीज डक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? ओविडक्ट में फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, विजाइना कंस्टिट्यूट अ फीमेल एसेसरीज डक्ट. ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 centimeter long. Fallopian tube you will see there, this one is fallopian tube. ठीक है, ईच फैलोपियन ट्यूब कितना है? 10 to 12 centimeter long and extend from a periphery to each ovary to the uterus. Yes, see, इसका क्या पोजीशन, कहाँ से एक्सटेंड हो रही है? पेरिफेरी रीजन्स ऑफ द ईच ओवरी. ये दिस वन इज ओवरी, दिस वन इज ओवरी और पेरिफेरी रीजन से ये क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है. ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूट्रस. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप. सी दिस, द पार्ट ओवरी क्लोज टू द यूट्रस. ये यूट्रस का जो पार्ट है ये कैसा शेप का है? ये फनल शेप का. ठीक है, तो क्या है? रीड करेंगे. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. दिस वन कैसे शेप का है? ये फनल शेप का. क्लियर स्टूडेंट? फनल शेप्ड is called as infundibulum. Yes, you see here infundibulum. The age of the infundibulum possesses finger-like projection. This one, see. This one is finger-like projections, and this finger-like projection is called as fimbriae. Clear, student? This one is called as fimbriae. Clear? Fimbriae. Each help in collections of ovum after ovulation. After when ovary lays a egg, these egg, it is after ovulation these egg collect by the infundibulum. infundibulum का काम क्या है? ओवरी से जब एग फॉर्म हो रहा है और रिलीज हो रहा है तो infundibulum उसको क्या करेगा? फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करने में हेल्प करेगा. द infundibulum लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. ये क्या है? इनफंडिबुलम अब आगे जाके कैसा हो रहा है? वाइडर पार्ट्स फॉर्म कर रहा है. ये वाइडर पार्ट्स फॉर्म कर रहा है. इट वाइडर पार्ट्स द ओविडक्ट, इट इज कॉल्ड एज एम्पुला. ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आगे जाके ये वाइडर पार्ट फॉर्म कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला. द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एज इस्थियम. तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है. फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट सेम है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका इनफंडिबुलम, सेकंड एम्पुला, थर्ड इस्थीमस. हमेशा ये क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सो यू विल लर्न दिस पॉइंट. ठीक है,
Fimbriae or fingers like structure is called fimbriae. Then wider parts is called ampulla. Then last closer part which is just close to uterus cavity, it is called as ischium. So there are three parts I have just discussed. The uterus is single. ओवरी यहाँ पे दो है बट यूट्रस क्या है? सिंगल यूट्रस, दिस वन. ठीक है, सिंगल. नहीं तो ये मस्त कंफ्यूज होना कि दो ओवरी है तो दो यूट्रस होंगे. यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज कॉल्ड एज बॉम्ब. द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इज इन्वर्टेड पियर. कैसा शेप है इसका? इन्वर्टेड पियर जैसा. इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स. ठीक है, दिस वन. किसके थ्रू ये सपोर्ट कर रहा है? लिगामेंट्स, दिस वन. ठीक है, दिस वन, लिगामेंट्स. बेसिकली क्या होता है लिगामेंट्स का वर्क? क्या होता है कि बोन्स को अटैच करता है, बट यहाँ पर सॉफ्ट पार्ट्स को भी अटैच करने के लिए लिगामेंट्स का यूज़ होता है. तो लिगामेंट्स के दो यूज़ हैं. सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज अ supporting skin like structure which is called as ligaments, and ligaments attached to the pelvis wall. ये किससे अटैच्ड है? ये पूरा pelvis रीजन है. कौन सा रीजन है ये? pelvis रीजन. सो इससे ये अटैच रहता है. इट इज सपोर्ट बाय ligaments attached to the pelvis wall. The uterus open into vagina. This uterus कहाँ ओपन हो रहा है? ये vagina पर. ठीक है, दिस वन. इसको बर्थ कैनॉल भी कहते हैं. It is called as birth. Where is student? Birth canal, or the uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal. This one, ये कहाँ पर है? cervix है, ये ऊपर cervical canal. और this one called is cervix. Cervix, cervical canal, then vagina. Which along with vagina form a birth canal. Vagina क्या बना रही है? Birth canal. The wall of the uterus has 3 layers. This one, wall of the uterus. ठीक है? It is made up of 3 layers. First one, yes. So wall of the uterus has 3 layers of tissues. There are 3 layers. This one, endometrium. You will read again this term. Myometrium and perimetrium. ये क्या है? थर्ड, wall of the uterus. Wall of the wall of the uterus. Okay. The external thin membrane is called पेरीमीट्रियम है. पेरीमीट्रियम कैसा है ये? इट इज थिन वॉल स्ट्रक्चर, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मिडिल लेयर थिक लेयर एंड स्मूथ मसल्स. किससे फॉर्म है? स्मूथ मसल्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स. यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 10. कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्ट्रेप्स मसल्स, और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, स्मूथ मसल्स इज इनवॉलेंट्री मसल्स. कैसी होती हैं ये? इनवॉलेंट्री मसल्स. इट इज़ कॉल्ड एज मायोमेट्रियम. ये किससे बना हुआ है? इनवॉलेंट्री मसल्स से, मायोमेट्रियम. एंड इनर ग्रैन्युलर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. और सबसे लास्ट की और सबसे थिक लेयर भी होती है ये, और ग्रैन्युलर्स लेयर, इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम. सो हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन यूटेराइन? In uterus there are 3 layers: outer perimetrium, middle myometrium, and inner layer is called endometrium. So there are 3 layers. This lines the uterine cavity. किसको? पूरा uterine cavity को cover किया हुआ है. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle. Endometrium बहुत important layer है, last layer है. If pregnancy confirmed, then it become a thick. If pregnancy is not confirmed, so endometrium will be break down, or it is come out in form of menstrual flow. ये endometrium blood के साथ, blood vessels के साथ छोटे छोटे से टिश्यूज़ के फॉर्म पर
विजाइना के थ्रू एग्जिट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और यदि प्रेगनेंसी कंफर्म है तो इट्स बिकम अ थिक लेयर एंड help in protections of the fetus. क्लियर स्टूडेंट? fetus और जो implantations होता है उसमें ये help करता है. तो endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while the myometrium means outer layer, its exhibit strong constructions during delivery of the baby. So this is the basic structure of female reproductive system. So in this part you have just understood two figures. This one is side views and this one is front views. These two figures you just make in your copy and make practice a lot of time, at least 3 or 4 times practice you will do. Now next point is conclusions of the following stanza. So here we just give some points in tabular form. So female reproductive system, basically it is divided in 3 parts: primary sex organ first, and secondary sex organ, and third one is external genitalia. Are you clear, student? Now primary sex organ, it is concerned with ovary. Secondary sex organ, it is concerned with accessories oviduct, accessories duct or accessories gland, which you have just read in previous page or previous slide. And third one is external genital. So primary sex organ is ovary. So ovary, the main points of ovary, it is a primary sex organs, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट्स प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, ठीक है, और सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, स्पेशली ओवेरियन hormones. Clear, student? Now second is ovaries are located one on each side of the lower abdomen and remain attached to the pelvic wall and uterus by ovarian ligament. We have just discussed in figure. Each ovary is almonds like flatted body measuring 2 to 4 centimeter in length. कैसा होता है ये? It is almonds like, बहुत ही small structure है, flatted body. The outer region of the ovary is composed of developing follicles. Follicles terms we will discuss in later. And the middle regions form stroma, which contains connective tissues, blood vessels and the mature follicles. The stroma is divided into 2 regions, peripheral cortex and inner medulla. Means this is internal structure of ovary. Ovary का internal structure है, ठीक है। और इस तरीके से उसमें ये outer part inner part होता है, ये outer ये इनर पार्ट, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है. आई विल डिस्कस लेटर ड्यूरिंग slides, during show slides. Then oviduct of fallopian tube, these are two small tube about 10 to 12 centimeter length laying in either side of the uterus near the kidney. The opening of the fallopian tube is expanded into funnel shape infundibulum, and the infundibulum has finger-like projections which is called as fimbriae. The move closer to the ovaries and help to and ovulation to collect the ovum after ovulation. फिम्ब्री का काम क्या है? ये कहाँ पर है? ओव्यूलेशंस के समय पर ओवरीज का ही पार्ट है, ठीक है, ओवरीज के जस्ट नियर होता है और ओव्यूलेशंस के समय पर ओवम को कलेक्ट करता है. द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट. इनफंडिबुलम क्या है? वाइडर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट. इट इज called as ampulla. Isthmus is the last part of the oviduct having narrow lumens which join the uterus. Then third
part is uterus. It is part of ovary. It is single, hollow, muscular, pear-shaped structure supported by ligaments and attached to the pelvic wall. यूट्रस लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड है और pelvic wall से अटैच्ड होता है. It is present between the urinary bladder and the rectum. urinary bladder और rectum के बीच में. The lower part of the uterus is very narrow and it is called cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which form the birth canal along with the vagina. The wall of the uterus has 3 layers of tissues. Uterus already we have discussed: perimetrium, myometrium and endometrium. Perimetrium, outer thin membranous covering of the uterus wall. Myometrium, middle thick layer of smooth muscles fiber which contracts strongly during delivery of the baby. Myometrium बहुत flexible nature का होता है. ठीक है, ठीक है, middle layer. और perimetrium outer layer. Endometrium, it is inner layer and contains glands and many blood vessels. It undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. Endometrium, menstrual cycle, when we will start menstrual cycle, then we will discuss role of the endometrium. So here this point, it's undergo cyclic changes, it is true, and it's help in menstrual cycle and after pregnancy during the menstrual cycle. So okay students, today's topic we have finished. Now next topic will be mammillary, the external genital. Okay student, so we will start external genital or accessory structure. We have already discussed accessories glands or mammillary glands. We will discuss in next topic. Thank you student, have a nice day.